Welcome to this lecture. In this lecture, we are going to discuss a very important discussion in SN, that is simplicity of A5. A5, that is the group of all even permutations including identity, and we know the order of A5 is S5 over 2. So we have the order of A5 is 60. Okay, so in this, by doing this discussion of simplicity of A5, we are going to discuss a group of order 60. Now let me tell you a important discussion about the group order from 1 to 1 to 200. Okay, so if we take any group whose order is from between 1 to 200, then between these 200 orders, we have only two orders, two orders, that is 60 and 168, for which the groups are, for which groups are non-abelian, non-abelian simple. That is, इन 20 ऑर्डर्स में से अगर हम किसी भी ऑर्डर का एक ग्रुप लेंगे तो केवल 60 और 168, ये दिस इज 168, 168, ये दो ही ऑर्डर के हमें ग्रुप मिलेंगे जिनके लिए ग्रुप नॉन अबिलियन सिंपल बनेंगे। ठीक है, अगर हम और प्रिसाइज वे में कहें तो अगर हम 1 2 3 4 इस तरीके से ग्रुप के ऑर्डर को कंसिडर करते आए तो 60 वो सबसे पहला ऑर्डर होगा जिसके लिए कोई ग्रुप नॉन अबिलियन सिंपल बनेगा। ठीक है, और ये जो नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप है वो A5 ही है, ये हम यहाँ पर आज देखेंगे। ठीक है, बिफोर गोइंग टू दी सिंप्लिसिटी ऑफ A5, सिंप्लिसिटी सिंपल ग्रुप्स क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप्स जिनके पास नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो उनको हम बोलते हैं सिंपल। इसका मतलब अगर हम G की बात करें, कोई हमारे पास सपोज ग्रुप है Z, तो इसके लिए वी हैव टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑलवेज, दैट इज वन आइडेंटिटी एंड ई, ये दोनों हमेशा क्या होंगे? ऑलवेज नॉर्मल। ठीक है, इन दोनों के अलावा अगर जी के पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तब हम जी को सिंपल नहीं बोलेंगे। तो जी को सिंपल कब बोलना है? जब जी के पास इन दोनों नॉर्मल सब ग्रुप के अलावा कोई तीसरा नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, उस केस में हम इस ग्रुप जी को सिंपल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम जब A5 को सिंपल प्रूफ करेंगे तो हमने ये शो करना है कि A5 के पास कोई भी नॉन ट्रिवियल, दिस इज नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, ऐसा हमने बताना है। ठीक है, तो बेसिकली A5 की सिंप्लिसिटी डिस्कस करने के लिए हमें नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए इन SN। सो SN के अंदर क्योंकि कॉन्जुगेसी क्लासेस को हमने डिस्कस किया है, तो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द कॉन्जुगेसी क्लासेस एंड the normal subgroup? So the next theorem is deal with this relation. So we have a statement regarding this theorem, and this theorem is still about relation between conjugacy classes and नॉर्मल सबग्रुप्स। ठीक है, इस थ्योरम को हम यूज करेंगे, सिंपल हमने A5 को प्रूफ करना है। इट सेज लेट G बी अ ग्रुप देन द नॉर्मल सबग्रुप्स of G are union of conjugacy classes of G, that is
if H is normal in G, then for every conjugacy class K of G, this is the conjugacy class of G, we have these two situations, either these two situations, okay? Either we have that K is a subset of H, or this K intersection H is equal to phi. We have this scenario only. So स्टेटमेंट कहता क्या है, सपोज हमारे पास एक ग्रुप G है और इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है H इज नॉर्मल इन G, और G के लिए हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस है, सपोज K1 K2 K3, ठीक है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जो H है दैट विल बी यूनियन ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस। हो सकता है H इज इक्वल टू K1 यूनियन K3 हो सकता है H इक्वल्स टू K1 यूनियन K2 हो, ओके, और हो सकता है H इज इक्वल टू K1 यूनियन K2 यूनियन K3 हो। इस केस में ये क्या बन जाएगा, G, राइट। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से, इन सब के यूनियन से वी विल हैव द नॉर्मल सब ग्रुप, ओके। स्टेटमेंट इज लाइक अगर H नॉर्मल है तो ये इन कॉन्जुगेसी क्लासेस का यूनियन है, ओके। सो लेट मी प्रूव दिस। अच्छा, इसी स्टेटमेंट को हमने क्या कहा है कि अगर कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे तो या तो वो कॉन्जुगेसी क्लास को कंप्लीटली अपने अंदर कंटेंट करेगा या फिर उस कॉन्जुगेसी क्लास का H के साथ इंटरसेक्शन फाई होगा। और यही सेंस हमें ये बताता है कि कोई कॉन्जुगेसी क्लास, या तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें ऐसा रिप्रेजेंटेशन है H का, तो इस केस में H या तो K3 कॉन्जुगेसी क्लास को कंप्लीटली ही अपने अंदर लेगा या फिर इसका इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा। तो हमें या यूनियन कहना या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, दोनों का सेंस सेम ही है। सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। सो लेट x is an element of G, x is an element of G and K be a conjugacy class, conjugacy be a conjugacy class of G containing X, and let K intersection H is not equals to phi, where H is a normal subgroup of G। ठीक है, हमने ये सपोज कर लिया है कि इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं है। अगर इंटरसेक्शन फाई नहीं है इसका मतलब ये K इसमें पूरी तरीके से जाना चाहिए। इसका मतलब X का हर एक कॉन्जुगेट H का मेंबर होना चाहिए, राइट। सो if X is this X is an element of G and K be a conjugacy class of G containing X, and let this is not equal to phi, and let X is a member of K intersection H। ठीक है, क्योंकि अगर X को कंटेन करने वाली कॉन्जुगेसी क्लास K है तो K में तो हमेशा ही रहेगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में X हमेशा ही आना है। सो दिस इम्प्लाइज X is a member of H, and this implies that G inverse is a member of GH, G inverse for all G belongs to G, right? But H is normal in G. This implies GH, G inverse is equal to H for all G belongs to G. Then
thus we can say thus G inverse is element of H for all G belongs to G, which implies that H contains all conjugates of x, क्योंकि हर एक g के लिए हमने g इनवर्स को कहा है कि h का मेंबर है, इसका मतलब h contains all conjugates of x and which implies k is a subset of h. So this is how we can prove this statement in a simple way. Now let us identify the theorem. Before this theorem, I am breaking this statement into two parts, proof of this statement into two parts, and this first part, in the first part we will count the number of conjugacy classes of the element of A5. Okay, so let me identify first. Under this we will identify simplicity of A5. Okay, first of all we will take in the first part हम करेंगे find the conjugacy classes of A5. ठीक है, now let us identify the order. A5 has order 60, right? So A5 has 60 elements. That means A5 contains 60 permutations, or I must say even permutation. Even permutations. अब even permutations कैसे होंगे? जिनका cycle odd होगा. Even permutations whose which are odd cycle permutations, which are odd cycle permutation. odd cycle permutation कहने का मतलब है जिसके अंदर odd number of elements हो उसके एक cycle को represent करने के लिए, उसके cycle को represent करने के लिए. ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर डिस्जॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में हमने किसी परमुटेशन को रिप्रेजेंट कर लिया है तो उसका ऑर्डर दैट विल बी द एलसीएम ऑफ द लेंथ ऑफ साइकिल्स. ओके, आई एम श्योर कि आपको परमुटेशंस के बारे में इनफ नॉलेज है क्योंकि कुछ कुछ कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दैट द ऑर्डर ऑफ A5 is 60, दैट मीन्स A5 contains 60 even permutations which are odd cycle permutations. So even permutations of S5. Then it is important to note that what S5 में, क्योंकि हमने कॉन्जुगेसी क्लासेस आइडेंटिफाई करनी है और ये जो डिस्कशन है वो S5 में ही बेसिकली चल रहा है. और S5 में कॉन्जुगेसी क्लासेस हमने कैसे ली थी, जस्ट प्रीवियस अभी लेक्चर में हमने देखा था कि S5 में कोई भी दो एलिमेंट आपस में कॉन्जुगेट कब होंगे, इफ़ दे हैव द सेम साइकिल टाइप. बट S5 में कॉन्जुगेट होने का मतलब ये नहीं है कि वो A5 में भी कॉन्जुगेट हो. जैसे कि हम क्या कहेंगे दैट it is important to note that two elements which are conjugate in S5 need not to be conjugate in A5. जैसे कि for example you can see
For example, let sigma is equal to suppose 1, 2, 3, 4 and 5, and suppose this is sigma 1 and then sigma 2 is equal to uh, 1, 3, 5, 2, 4. Okay, then then since then since sigma 1 and sigma 2 have the same cycle type, therefore they are conjugate in S5. Okay, but sigma 1 and sigma 2 are not conjugate in A5. ठीक है, सो हमने दो ये यू कैन वेरीफाई दैट कि हम ऐसा कोई भी टो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे दैट फॉर विच टो sigma 1 टो इनवर्स इज इक्वल टू sigma 2. ओके